Okay, now today we are going to learn the concepts of return of goods, that is purchase return and sales return. Now, see, whenever any transaction takes place in accounts, okay, it is generally with a supporting document. जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम कहीं पे भी कुछ खरीदने गए, सो व्हाट इज द प्रूफ कि तुमने खरीदा है? तो तुम बोलोगे कि चलो ये सामान मैं खरीद के लाया, ये देखो पहले मेरे पास नहीं था, अब ये आ गया है। पर क्या प्रूफ है कि तुमने वही प्राइस पे ये खरीदा है? कोई प्रूफ है नहीं। तो उसके लिए तुम क्या लेते हो? तुम हमेशा लेते हो बिल। यू अग्री विथ मी? तो हर एक ट्रांजैक्शन is to be supported with the help of some documentary evidence. Okay, such documentary evidences are known as vouchers. Now, ये जो documentary evidence है, यानी कुछ भी movement हुआ, कुछ भी transaction हुआ, there has to be some proof or evidence of that transaction. तो उसके लिए जब हम खरीदते हैं तो वी हैव अ इनवर्ड इनवॉइस नंबर, बिल होता है जो प्रूफ होता है कि इस तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुआ, इतने रुपए का ट्रांजैक्शन है, इतना क्वांटिटी गुड्स है। ओके, नाउ ये टर्म्स ऑफ परचेज था। नाउ परचेज किया तो प्रूफ इज परचेज बिल और इनवर्ड इनवॉइस नंबर। बट what is the proof when we return goods? परचेज किया हुआ जब हम रिटर्न करते हैं, उसके लिए we prepare a document which is known as a debit note. So debit note is basically a note. You can see over here the format of a debit note. Okay, specimen यानी format, यहाँ पे ये जो डेबिट नोट है उसका फॉर्मेट है। सो जस्ट कम टू दिस पेज, दिस इज पेज नंबर 141, पेज नंबर 141 इन योर टेक्स्ट बुक। नाउ ये जो डेबिट नोट है, यू कैन सी देयर इज अ डेबिट नोट नंबर। ये डेबिट नोट इज मेड बाय दिस पर्सन, श्री पटेल ट्रेडिंग कंपनी। ये पर्सन एक डेबिट नोट दे रहा है टू श्री शिवम ट्रेडर्स। Now, you can see over here, date is given. This is the format of debit note, okay? ये debit note का format as a theory question can come in your exam. तो ध्यान दो, जरा समझ लो, ये प्रैक्टिकल डेबिट नोट शायद तुम अभी नहीं देखो, तुम सिर्फ परचेज बिल, सेल्स बिल देखते हो, बट ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। नाउ तो ये एक स्पेसिमेन है यानी एक फॉर्मेट है। ओके, नाउ 2015 March 7, 10 chocolate boxes returned due to inferior quality, each box rupees 2000. So 10 into 2000 is 20,000. पटेल ट्रेडिंग कंपनी का जो पार्टनर है पटेल भाई, उसने साइन कर दी। नाउ यहाँ पे ध्यान दो, इसको हम डेबिट नोट क्यों कहते हैं? ये तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आया ही होगा कि सर हम इसको डेबिट नोट क्यों कहते हैं ना। इस ये कंसेप्ट समझाने के लिए लेट्स से कि यहाँ पे पटेल ट्रेडिंग कंपनी यानी वी आर श्री पटेल ट्रेडिंग कंपनी, हमने शिवम ट्रेडर्स से सामान खरीदा। सो एट दैट टाइम व्हेन वी परचेज द गुड्स, वी पास द एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू शिवम ट्रेडर्स अकाउंट। Short form, I write Shivam over here to Shivam account. All of you agree with this entry? किसी को कोई इसमें डाउट है? This is entry for purchase. Now, what will be the entry for purchase return? Can you tell me the entry for purchase return?
Shivam account debit to Shivam purchase account debit to purchase return. वेरी गुड, शिवम अकाउंट डेबिट। शिवम को हमने गुड्स वापस कर दिया, शिवम इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, सो डेबिट कर दिया शिवम को, टू गुड्स गोज आउट, सो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नाउ यू कैन सी, ये है इन द बुक्स ऑफ, हेडिंग दे रहा हूं मैं, पटेल ट्रेडिंग कंपनी। सो पटेल ट्रेडिंग कंपनी ने जब खरीदा तो शिवम को कर दिया क्रेडिट, और जब गुड्स रिटर्न किया तो शिवम को क्या किया हमने, शिवम को क्या किया हमने, डेबिट किया, डेबिट किया। तो अगर हम शिवम को हमारे बुक्स में डेबिट करते हैं तो हम जो नोट बनाते हैं उसका नाम है डेबिट नोट। अंडरस्टूड दिस? यस सर। तो यहाँ पे हम उसका अकाउंट डेबिट करते। अब किस वजह से डेबिट किया, क्योंकि उसने जो चॉकलेट के बॉक्सेस दिए वो इंफीरियर क्वालिटी के थे, तो 20,000 हमने रिटर्न कर दिया, तो उसकी वजह से अब हमें उसको कम पैसा देना पड़ेगा। सो डेबिट नोट हमने बनाया, तो हमने उस पर्सन को जिसको गुड्स रिटर्न किया उसको हमारे बुक्स में डेबिट किया। नाउ अगर हम सेल्स रिटर्न करते तो क्या होता, हम इसको डेबिट करते या कस्टमर को क्रेडिट करते, credit. क्रेडिट करते। Credit. तो आता है क्रेडिट नोट। आई विल कम टू इट लेटर। ये कंसेप्ट सबको पता चल गया डेबिट नोट क्यों कहते हैं? ओके, नाउ डेबिट नोट में ये सब डिटेल्स तो तुमने देख ही लिया है, उसका एड्रेस है, उसका नाम है। ओके, यू कैन मेक अ डेबिट नोट ऑन अ लेटर हेड and send it along with the goods which you are returning. So it is also a documentary evidence supporting return of goods, purchase return. Now, यहाँ पे दिया है डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो डेबिट नोट कौन से सर्कमस्टेंसेस में आता है जरा एक बार देखो। नाउ what circumstances is debit note prepared? Okay, when the goods are not as per sample, जो sample दिया था उस हिसाब से goods नहीं आए तो हमने उसको वापस कर दिया, inferior quality था, damage था। Secondly, invoice received is for more amount than than amount of actual goods purchased, or when quantity shown in invoice is more than actual quantity of goods रिसीव्ड, यानी ज्यादा अमाउंट का बिल बना दिया या फिर ज्यादा क्वांटिटी दिखा दिया पर हमें क्वांटिटी कम मिला, तो हमें ये एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम डेबिट नोट बनाते हैं। इफ मोर अमाउंट्स आर क्रेडिटेड टू सप्लायर अकाउंट ड्यू टू एरर कैलकुलेशन, यानी हमने जब ये एंट्री पास किया परचेज टू शिवम, ओके, तो उस पे जो बिल था उसमें कैलकुलेशन एरर था, तो उसकी वजह से ज्यादा उसने बिल अमाउंट बना दिया, तो हम उसको करेंगे डेबिट। देन डेबिट नोट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड, ये दिस इज अ वेरी ट्रिकी वन, ध्यान दो प्लीज। when empty bags or containers return is to be recovered, यानी जब मैंने खरीदा तो कंटेनर के साथ आया, अब मैंने क्या किया, वो कंटेनर्स वापस कर दिए, तो मेरे लिए हो गया परचेज रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल कोको कोला, थम्स अप का पहले बॉटल्स बहुत फ्रीक्वेंटली बिकता था, तब कैन और पेट बॉटल, प्लास्टिक बॉटल का एक टाइम पे जमाना नहीं था, तो ये जो बॉटल्स है मैंने खरीदा, उसके बाद मैंने जब वापस कर दिया ये खाली बॉटल, तो उतने के लिए मुझे रेज करना पड़ता है एक डेबिट नोट। इज दिस क्लियर? You understood what is empty bags or containers return is to be recovered? No sir, नहीं समझ आया। मान लो कि तुमने खरीदा
तुम एक दुकानदार हो, तुमने एक बॉक्स नहीं लेते हम, बॉटल ही लेते हैं, एक बॉटल थम्स अप का, ओके थम्स अप का एक बॉटल ₹10 में हमने खरीदा। अब जिससे हमने खरीदा उसने कहा कि ये जो बॉटल है वो तुम्हें मुझे वापस कर देना है, तुम मुझे वापस करोगे तो मैं ₹1 तुम्हें वापस दे दूंगा। तो अब जब मैंने खरीदा 100 बॉटल्स, तो मुझे देना पड़ा उसको ₹1000 देना पड़ेगा। पर मैंने क्या किया, उसमें से फिर ये 100 बॉटल्स उसको लौटा दिए, तो अब मुझे ये 100 माइनस करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं रेज करूंगा एक डेबिट नोट। अंडरस्टूड दिस नाउ? Yes. अंडरस्टूड दिस? Yes. Yes. तो दैट इज व्हाई इट इज गिवन कि एम्प्टी बैग और कंटेनर, ओके, रिटर्न कर दिया। फॉर एग्जांपल तुम तुम्हारे घर पे जब रोज सुबह दूध की थैली मंगाते हो, ओके, तो वो दूध की थैली यूज होती तुम उसको साइड में कलेक्ट करते जाते हो, और फिर तुम वो स्क्रैप वाले को देके उससे पैसा रिकवर करते हो। वैसे ही यहाँ पे ऑपरेट होता है व्हेन देयर आर एम्प्टीज और कंटेनर्स व्हिच आर टू बी रिटर्न, व्हिच कैन बी रिटर्न सो दैट you get some money back. Got it? Got it? Yes. Yes, ma'am. Now, debit note is also prepared when discount is received from the trader. अब मुझे किसी को देना था ₹10,000, पर उसने बोला कि एक मैं स्कीम लाया हूं कि तुम अभी पे कर दोगे तो तुम्हें ₹500 माइनस हो जाएंगे। तो आई से वेरी गुड, तो मैं उसके लिए एक डेबिट नोट रेज करके उसको दे दूंगा कि अब ये ₹500 मैं माइनस कर रहा हूं, और अब मैं तुम्हें सिर्फ 9,500 दूंगा। तो डेबिट नोट इज फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स, पर इसके अलावा भी कुछ भी अमाउंट में एडजस्ट करना है, कंटेनर्स रिटर्न करना है, तो भी हम ये सिस्टम ऑफ डेबिट नोट फॉलो करते हैं एज अ एविडेंस कि हमने क्यों उसका पैसा डिडक्ट किया। कुछ रिटर्न किया गुड्स, कुछ बिल का अमाउंट का डिफरेंस था वो एडजस्ट किया, कोई डिस्काउंट था, या फिर कोई एम्प्टी बैग या कंटेनर वापस किया। Understood this? All of you? Yes, sir. Now, डेबिट नोट याद रखना कौन बनाता है डेबिट नोट? डेबिट नोट वो बनाएगा जो सामने वाले को अपने बुक्स में डेबिट करेगा। तो यहाँ पे पटेल ट्रेडिंग कंपनी ने शिवम को डेबिट किया, तो पटेल ट्रेडिंग कंपनी ने बनाया डेबिट नोट। अंडरस्टूड दिस? सिमिलरली फॉर सेल्स रिटर्न, अब सेल्स रिटर्न के लिए कौन सा नोट आएगा? इट विल बी क्रेडिट नोट। इज दिस क्लियर? जैसे परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट है, सेल्स रिटर्न में क्या होता है? अब देखो, शिवम के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में श्री पटेल ट्रेडिंग कंपनी को उसने सामान बेचा, तो उसके लिए पहला एंट्री आया पटेल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और रिटर्न हुआ तो उसके लिए एंट्री आया सेल्स रिटर्न टू पटेल। तो यहाँ पे पटेल को कर दिया क्रेडिट, तो यहाँ पे जो शिवम ट्रेडर्स है उसने पटेल को कर दिया क्रेडिट, तो वो बनाएगा एक क्रेडिट नोट। फॉर द सिमिलर रीजन कि कुछ वापस आ गया, अमाउंट में कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ एम्प्टीज या कंटेनर रिटर्न कर दिया। अंडरस्टूड दिस? डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। हु मेक्स अ डेबिट नोट? जो किसी को खुद के बुक्स में डेबिट करता है। हु मेक्स अ क्रेडिट नोट? जो खुद के बुक्स में किसी को क्रेडिट करता है। When I make a debit note, it is for purchase return. When I make a credit note, it is for sales return. तुम ये एंट्री लिख देना, एंट्रीज लिख देना तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, ताकि तुम्हें ध्यान रहे। ये वाली एंट्रीज भी लिख देना।
Now we will be doing question number 10. Now over here, from the following, prepare purchase book and purchase return book in the books of account of Gujarat traders. Now already you have made the format, so let's start with the sum. 2018 January 1, goods purchase of 1 lakh at 5% trade discount from Punjab stores. किधर आएगा ये, परचेज बुक में या परचेज रिटर्न बुक में? Purchase book. Purchase Purchase book. 2018 January, जान नहीं है, January है, January 1, Punjab stores, अकाउंट इनवर्ड इनवॉइस नंबर नहीं दिया है, 1 lakh at 5% trade discount. So 1 lakh का 5% is 5,000, so 95,000. Next, goods purchased of 60,000 on credit of 1 month from Maharashtra stores. Trade discount 10%, bill number 330. किधर आएगा ये transaction? Purchase book. Purchase book. So January 3rd. Maharashtra stores. Bill number 330. Amount is 60,000 minus 10%. So 54,000. Next, goods purchased of rupees 50,000 from Kerala stores on credit and 50% amount is paid immediately. So we will ignore 50% and we record this as a full credit transaction. 10. Kerala stores account. Bill number not given in purchase book 50,000. सर नोट्स नहीं बनाए पड़े? हाँ बनाओ सुन. Now we write a note. January 10th, half amount, so that is rupees 25,000 paid will be recorded in cash book. Will be recorded in cash book. Next, 1/3, 17th, pay attention please. 17th, pay attention please. 1/3 goods is returned to Maharashtra stores. तो तुम देख सकते हो 1/3 we are returning along with debit note number 43 of appropriate amount is sent. So we are preparing a debit note because हम ये goods return कर रहे हैं महाराष्ट्र stores को. Maharashtra store is the receiver, debit the receiver, hence debit note. So 17th will go to purchase return book. 2018
January 17, Maharashtra store. Debit note number 43, 1/3. So directly 54,000 जो है उसका 1/3. 54,000 divided by 3. So it comes to 18,000. परचेज बुक में महाराष्ट्र स्टोर है तो परचेज रिटर्न में भी महाराष्ट्र स्टोर ओके उससे खरीदा था उसको ही हम वापस कर रहे हैं 18,000 का गुड्स 1/3. Any doubt anyone? Okay. Now next one, goods purchased of 40,000 at 10% trade discount from Rajasthan stores. Rajasthan store has sent invoice number 160 after adding 5% GST. Now पहले VAT था अब हो गया GST and labor 400. Now GST और labor को हम यहाँ record नहीं करेंगे. We will record them in journal proper. We are not making a columnar subsidiary book. That's why. So here we record only goods. So 21st Rajasthan stores. सर Yes. अगर इधर वो वीएटी होता तो उसमें हम रिकॉर्ड करते। नहीं रिकॉर्ड करते। मेरे वीडियो लेक्चर में VAT वैट है क्योंकि पुरानी टेक्स्ट बुक में ये सेम सम था। इसको जब उन्होंने रिवाइज किया विद जीएसटी को वैट के बदले जीएसटी लिख दिया बट दोनों रिकॉर्ड होगा नहीं. दे विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर. ओके ओके सो राजस्थान स्टोर्स 40,000 10% trade discount 160 invoice number so 36,000 proceed यस सर Yes. goods purchase of 50. Acha, we have to write a note before we proceed. Jan 21. We write a note GST and labor charges will be recorded in journal proper. GST and labor charges will be recorded in journal proper. (25th) Goods purchased 50,000 on credit from Uttar Pradesh stores. Credit period is of 2 months and trade discount is 10%. So now it's a credit transaction. 25th Uttar Pradesh stores account. Bill number 380. 50,000 10% trade discount, so 45,000. Now, out of total goods purchased from UP stores, 30% goods is returned along with goods. You can see along with goods, debit note 44 is sent. यानी एक डॉक्यूमेंट जो गुड्स के साथ ट्रक में जाएगा, कुरियर में जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि हम इतना सामान यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं. डेबिट नोट 44 is sent. So returns में आ जाओ 29.
Uttar Pradesh stores. Debit note number 44. Amount is 30% of 45,000. So it comes to 45,000 13,500. 30%, 13,500. डायरेक्ट तुम कैलसी पे परचेज का अमाउंट है 45,000, उसका 30%, so that comes to 13,500. 4,500 into 3. Now, an order of goods purchase of 80,000 is placed on Madhya Pradesh store. So let's write a note. January 30th. It is a non-economic transaction. It is a non-economic transaction. (31st) goods of 30,000 purchased at 10% trade discount, 5% cash discount on cash from Haryana stores on cash. So it will be recorded in Cash book. Cash book. so 31st cash purchases will be recorded in cash book. Cash purchases will be recorded in cash book. Let's do the total. $280,000 and 31,500 total credit purchases. Now परचेज रिटर्न जो है वो भी क्रेडिट का होगा तो ही इसमें रिकॉर्ड होगा. अगर परचेज रिटर्न कैश है तो इट विल गो टू कैश बुक. टोटल क्रेडिट परचेज रिटर्न. प्लीज क्लोज द सम. And start making format for question number 12, where you have to prepare purchase book, purchase return book, sales return book. ये सब हो गया सबका? ये सब हो गया सबका? Yes, sir. Okay, now question 12 में you will have to make 4 formats. You can see it on your screen. Now, what I have done is I have made purchase book and then purchase return book below it, sales book and sales return book. So you can do it on 2 pages. So it becomes easy. Purchase के नीचे purchase return, sales के नीचे sales return. Okay, or you can follow the textbook where you make purchase book, purchase return, sales return. So I feel this is more comfortable for students, so I'm going for this order. Okay, so please make the format. Take 2 pages opposite to each other. We will be doing question number 12. Now prepare purchase book, sales book, purchase return book and sales return book in the books of PK stores from the following transactions. Now, essay full-fledged sums are expected in your exam. Okay, so practice this. Okay, have a speed of making the format. Remember the headings of the format. They are very simple, but you have to make multiple formats. That is 4 formats. Now, let's start 2015 November 1. Purchase goods of 30,000 from Ramanuj at 10% trade discount. Bill number 120. Now, कहाँ आएगा ये? Purchase book, sales book, purchase return, sales return. कहाँ पे आएगा ये? Purchase book. Purchase book. Purchase book. 2015 November 1.
Ramanuj account. Bill number 120. 30,000 minus 10%. So 27,000. Next. Fourth, purchase goods of 12,000 from Nirmi at 10% cash discount. Credit period 1 month. Bill number 130. Tell me, is this a cash transaction or a credit transaction? Credit. 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 पर कैश डिस्काउंट दिया है तो भी क्रेडिट. Credit period 1 month hypo છે. Credit period 1 month आपके उतने 10% cash discount condition is given, but we are not paying. Nothing is mentioned over here. Is this clear? Will we deduct 10% from 12,000? No. Will we deduct No. 10%? No. No, sir. Be careful in exam. Okay, so fourth, Nirmi account. Bill number 130. Amount is 12,000. Sold goods of rupees 15,000 to Suresh at 5% trade discount, 3% cash discount under bill number 350. Will we deduct 3% cash discount? Will we deduct 3% cash discount? No. No. Okay. So sales sold goods, so it will be recorded in sales book. November 6. Go to sales book. Name of the person is Suresh account. Invoice number 350. Amount is 15,000, 5% trade discount. So 14250. Purchase goods of rupees 10,000. Cash memo number 58. What is a cash memo? Cash memo is a bill for goods purchased or sold on cash. Is this clear? उसको कहते हैं हम cash memo. Now purchase goods of 10,000 cash memo. It's a cash transaction. Write the note November 11. Cash purchases will be recorded in cash book. Cash purchases will be recorded in cash book. Then Suresh returned goods of 3,000, credit note 20 cent. Tell me ये कहाँ record होगा? सुरेश return goods 15 को. Sales return book. Sales return book. Sales return book
2015 November 15. Now sales के नीचे sales return we have made. So Suresh account, credit note number 20, amount is 3,000. (17) 40% goods returned to Nirmi and debit note number 17 sent. अगर कंफ्यूजन है तो तुम खुद ढूंढ सकते हो कि निर्मी को किधर लिखा है हमने. परचेज बुक में लिखा है, तो यहाँ पे निर्मी विल गो टू परचेज रिटर्न बुक एंड वी हैव रिटर्न गुड्स टू निर्मी. निर्मी इज द रिसीवर, सो उसको डेबिट किया तो डेबिट नोट नंबर 17. So purchase return book में November 17. Nirmi account, debit note number 17. Amount is 40%, so 12,000 into 40%, 4,800. Got it? Next. Purchase goods of 7,000 from Shri Saraswati Furniture Mart. कहाँ पे ये रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में? General. नहीं, जर्नल प्रॉपर. Journal proper. So write a note, November 19. Credit purchase of furniture will be recorded in journal proper. Also known as general journal. Next, purchase goods of 90,000 from Auntie. Half of the amount paid immediately, half amount, so it will be treated as full credit transaction and recorded in purchase book. 20th. Auntie account, 90,000, purchase book. Inward invoice number not given. Sir, below 50 more use that come for it. So, Sir, below 15 per more use आपको international लिखवाना. 15, हाँ sir. Suresh account, write in sales return. Now, all the goods purchased सर from, नोट्स रहे ने. so, note we have to write. So write the note 20th. Rupees 45,000 paid will be recorded in cash book. (21st) all the goods purchased from Auntie sold to Bala for 1,08,000. Credit note credit 1 month, trade discount 10%, bill number 360. तो जो हमने खरीदा था वो बाला को बेच दिया. Sales book sir. हाँ, सुमानो. Sales book में sir. Yes, yes, very good. Sales book में 21. बाला, ओ बाला, ओ बाला,
Bala account. Now 1,08,000 bill number 360, 97,200. 1,08,000 minus 10%. Okay, now 23rd, very important, please mark it important, 23rd. Bala returned half of the goods which we say had which was sent to Auntie. Now बाला ने हाफ गुड्स रिटर्न किया और हमने वो हाफ गुड्स औंती को रिटर्न कर दिया, यानी हमने औंती से खरीदा, बाला को बेचा, बाला ने हाफ गुड्स रिटर्न किया, तो वही गुड्स हमने औंती को रिटर्न कर दिया. नाउ सेल्स के नीचे सेल्स रिटर्न, परचेज के नीचे परचेज रिटर्न. सो कम ओवर हियर, यहाँ पे 23rd सेल्स रिटर्न पहले हम लिखेंगे बाला अकाउंट. हाफ ऑफ द गुड्स, सो डायरेक्टली 97,200 का हाफ, that comes to 48,600. Now हमने जितना खरीदा पूरा का पूरा हमने बाला को बेच दिया, तो बाला ने आधा वापस किया, तो वही आधा हम औंती को वापस कर देंगे. सो परचेज रिटर्न अगेन 23rd औंती अकाउंट. नाउ कितना अमाउंट आएगा परचेज रिटर्न का? Sales return, sales price, purchase return, cost price or purchase price. So how much it will be? What will be the amount? It will be 45,000. कैसे आया? 90 का half, that comes to 45,000. Understood this, all of you? Any doubt? Yes, sir. સર આ 45,000 માં મને ડાઉટ છે, એટલે કેવી રીતના આવ્યો? 45,000 કેવી રીતે આવ્યું? જો બહુ સિમ્પલ છે, આપણે औंती આગળથી 90,000 ના ગુડ્સ વી હેડ પરચેઝ, એ પૂરા ગુડ્સ આપણે બાલાને વેચી નાખ્યા ફોર 97,200. નાઉ બાલાએ એના હાફ રિટર્ન કર્યા, તો 97,200 ના હાફ ઇઝ 48,600. તો औंतीને આપણે હાફ રિટર્ન કરશું, તો 90,000 ના હાફ કેટલા થઈ જશે? 45. 45,000. ઓકે, હા સર. Understood this? યસ સર. પૂરેપૂરા ગુડ્સ જ વેચી દીધા હતા. Is this clear? યસ સર. Okay. Now, Karan placed an order. So Karan has placed an order. Good for us. It's a non-economic transaction. Non-economic transaction. Karan placed an order of 30,000 at 10% trade discount for supply of goods. So he has placed an order. Now, 25th, goods sent to Karan as per order, 500 added for carriage under bill number 365. So we are sending goods to Karan. तो ये कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा? સેલ્સ બુક. Sales book. Very good. So 25th sales book. Current account. $30,000 minus 10% trade discount, bill number 365. So 27,000. Carriage will not be recorded over here. We record it as a note. 25th. Carriage will be recorded in journal proper.
if it was given कि carriage is paid, then it will be recorded in cash book. If it's not given, it is added in the bill, so it will be recorded in journal proper. So in sales book, you record current account and then you write a note, 25th. 26, cash purchase 16,000, cash sales 20,000. So both of them will be recorded in cash book. 26, cash purchases and cash sales will be recorded in cash book. Next, return goods to Sweetie of 10,000, which was purchased in October and sent debit note number 20. So now you can see कि purchase book में नवंबर में स्वीटी कहीं पे भी नहीं है. तो स्वीटी से हमने खरीदा था in October, but right now we are returning goods to her, so we record it in purchase return book. So in purchase return book 27, Sweetie account, debit note number 20, amount is 10,000. We had purchased in October, but we are returning in this month. So this month के purchase return में it will come. Current return, half of the goods and proportionate amount of carriage was given credit. Now carriage will be recorded in notes, okay, in journal proper. Current return, half of the goods. So current को sale किया था, उसमें return half of the good. Sales return, so 30th. Current account, no credit note number is given, half of the goods, so 13,500, 27,000 का half. We write a note for carriage. Credit for carriage will be recorded in journal proper. Will be recorded in journal proper. Now all done. So do the totals. Total credit purchases. $1,29,000. Total credit purchase return $59,800. Total credit sales $1,38,450. Total credit sales return 65,100. Please check this. Check the totals.